Hello and welcome to the second part of the story The Beggar by Anton Chekhov. ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ବେଗର ଏବଂ ସେର୍ଗାଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଉଭୟଙ୍କର ମୁଲାକାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବେଗରକୁ ସେ ତା ପାଖରୁ ସତ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେର୍ଗାଇ ତାକୁ କିଛି କାମ ଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ କଲେ. He offered him to chop wood for him, and at last the beggar agreed to work for him, chop wood for him. So let us go on to part 2 of the story The Beggar and see what happens next. Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. "Here, Olga," he said, "take this gentleman into the woodshed and let him chop wood." तापरे Sergei hastened मैंने हरबर हो गले, तरतर हो गले, हाथ दुईटा तांकर घसी rubbing his hands. से तापरे तांकर कुक जे थिला किचन रू तांको कुक को डाकिले एवं what was the name of the cook? Her name was Olga. So Sergei called Olga and instructed her to take the gentleman into the woodshed to let him chop wood. ताकू कहले यही भद्र व्यक्ति को तुम्हें काठ गोदाम को नहीं जाओ जो कि से जाई काठ काटिबो. वुडशेड माने होचे काठ गोदाम. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. This was the scarecrow. What do you mean by scarecrow? This is a picture of a scarecrow. एटा मैं देखिता हूँ विभिन्न शस्य क्षेत्र सेठी टंगा जाई थाए बाहरु विभिन्न पशु मान को घोड़ेबा पई चासी माने एटा देई थांती स्केयरक्रो जाको आमे ओडिया रे पाळभूत बोली कहिता हूँ. The scarecrow of a beggar means, what do you mean by this line, this expression? Scarecrow देखियो तो पिला माने as you see in the picture the physical structure of a scarecrow. Scarecrow गुड़ा काण अति दुबला पतला होई थांती एवं माने beggar से भिखारीटा से अति मद्यप जो पी पी कर तार शरीर नष्ट हो जाता एवं से जड़े ता देहरे आ कि ना केवल कंकाल देखा जाऊला. स्केयरक्रो सेमती देखा जाए कंकाल भाया देखा जाता है. तेणुक कहुच्छी द स्केयरक्रो ऑफ ए बेगर. दिस इज ए मेटाफर. या आम मेटाफर बोली कही था यहाँ को रूपक बोली कही था अलंकार तुम पढ़ साहित्य बही. द स्केयरक्रो ऑफ ए बेगर श्रक्ड हिज शोल्डर्स. श्रक माने निजर कांध को ऊपर को करवा उच्चा करवा. श्रक्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी. परप्लेक्सिटी मीन्स काना कन्फ्यूजन. Confusion means this is a state of mind when someone is not able to decide what to do or not. That is confusion. As if in perplexity and went irresolutely. Irresolutely means hesitantly, not in with a lot of interest. Not in a lot of interest. माने कौनसी इच्छा नहीं करी उटे अनिच्छुक हिसाब रे irresolutely माने hesitantly after the cook. जते बड़े कुक बा अलगा ताकू काठ गोदाम को डाकिला सेतेबेले से ता पछे पछे गला एवं जीवा संगरे ता मन भितर असुमारी प्रश्न थिला. से कौन करबा को जाउछि, कौन तार हबो, काम करबा पई तार गोटे मात्र टिके भी इच्छा नथिला. टिके भी he didn't have any sort of interest in work. And how do you know this? आमे केमती जानिबा ता काम करबा पई he had no interest at all. केमती आमे जानिबा?
It was obvious from his gate. It was obvious from his gate. Gate means kano? Gate means chali boli हम जा कहता हूँ. It was obvious from his gate that he had not consented. Consented means agreed. Raji havatta. To go and chop wood because he was hungry and he wanted work. But simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକାରୀଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ସେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଭୋକରେ ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ କାମ ଦରକାର ଥିଲା ବା ସେ ଭୋକରେ ଥିଲା ଏଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. ବାସ୍ତବତାଟା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା ମିଛ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କାଳେ କେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଜ ବା ଏଇ ଲାଜ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲା एडवोकेट सहित आसिकरी काम करबा पई एई पई काम करबा पई से इच्छा नथिला इट वाज नॉट द रीजन दैट he needed work very much or he had been hungry. This was not the real reason. The real reason was that he had been trapped by his own words and his falsehood. It was obvious to that his strength had been undermined by vodka. What do you mean by vodka? Vodka is a Russian drink. गोटे रूस देशर गोटे मदर नाम अंडरमाइंड मान दुर्बल कर इट वाज ऑब्वियस एटा आ गोटे स्पष्ट जना पड़ुला जे से अत्यधिक भोडका पान जोगु भोडका पीवा जोगु तार शरीर दुर्बल होइतिला एवं से अत्यधिक असुस्थ जना पड़ुला एवं he did not feel the slightest he did not feel the slightest inclination means interest for toil means hard work आ गोटे जिनिस तार दुर्बल शरीर मध्य तार टिके तिले मात्र इच्छा नथिला कौन सी एमती हार्ड वर्क बा कठिन परिश्रम करबा पाई he came to the advocate's home only because that he thought that he might be trapped by his own words. He would be caught by his falsehood. That's why he consented to come and work for the advocate. Otherwise, he would not have come. Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. Let's try to know the meanings of the words. Glared means ragore katamoto hi dekhiba. Wrathfully means with extreme anger अत्यधिक रागी करी. Shocked means pushed ठेली दबा. और bang means खूब जोर रे धक्का मारिवा आवाज दबा. तापरे परे सरगई संगे संगे जेते बेले ओल्गा भिकारीटी को डाकी नेला सरगई संगे संगे जानिबा पे चेष्टा कले से दी जण कोन करबा पे जाउछंती. से संगे संगे तांको डाइनिंग रूम को गले. तांको डाइनिंग रूम रो झरका जोटा थिला सेइठु जणे काठ गोदाम देखि परिबो बा तांको घर अगणा रे कोन कोन घटुची जणे देखि परिबो. From its windows one could see the woodshed and everything that went on the yard. Standing at the windows, सेठी कोन झरका पाखरे ठिया है Sergei देखिले. Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door. से देखिले जे उभय कुक एवं बेगर पछ तांकर रास्ता दे पछ अगणा देकरी से माने आसिले एवं both of them made their way across the dirty snow to the shed. से माने जेकरी से जो बरफ पड़ीतला आउ सेठी आवर्जनापूर्ण बरफ पड़ीतला से बरफ देकरी से माने जेकरी पछ गेट देकरी तांको काठ गोदाम को गले. तापर कोन हला Olga glared wrathfully at her companion.
तार companion, who was her companion at that time? It was the beggar. It was the beggar. Olga glared wrathfully at her companion because to Olga, it was probably the beggar was an unwelcome guest to their house. Olga देखला ए लोकटा देखिले केमती गोटे विरक्तिकर देखा जाउछे सब तार चेहरा देखिले गोटे मद्यप देहरे किछि मांस नाही केवल कंकाळमय देखा जाउछि से भली जणे व्यक्ति को देखकरी अलगा को केमती गोटे अजब लागुतला सी ताको विरक्ति भरा आखिरे देखिला ताको देखिला एवं ताको तार एल्बो बा कोहुणी साज्ୟରେ ताको ठेली देला संगे संग जाई करी से कबाटटी सेठी ताला खोलिला एवं जाई करी तार डोर रे कबाट रे जोर से आघात कला बैंग द डोर खूब जोर रे आघात देला एटा सर्गेई एडवोकेट सेठी तांको झरका पाखरे ठिया हे ए समस्त घटना बोले देखुतली. He had been observing all the incidents that were going on between the beggar and the cook. Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or cutting his finger. The stick of wood again fell to the ground. Pseudo. Sometimes the word is pronounced as pseudo or it is pseudo. Pseudo means fake. Fake means false, nakli. So the pseudo teacher, who was the pseudo teacher, the so-called tathagatita teacher, the beggar, because at the outset the beggar declared himself to be a teacher, relay school teacher who had worked for about 8 years. So he is obviously the pseudo teacher here. So Sergei next he saw the pseudo teacher seat himself. देखो पिले तुम बही रे scat himself लिखाई छि जार केनसी किछि एंती मीनिंग नाही एठी irrelevant ताको मैं सेट स्ट्राइक करिसी एटा हवा कथा seat 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 himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. Fist माने हाथ मुठा. The woman flung means threw, फिंगी दवा, flung down an axe at his feet, axe माने जेंचा कुराडी, at his feet, spat angrily, spat माने छेप पकेइबा, थुकिबा angrily, and बहिर अछि तमरो JUGGING, God knows what that means, but that should have been judging, JUDGING, judging. From the expression of her lips began to scold him. Then the beggar irresolutely pulled the billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. तो बही रे लिखा है feels down, because there is a single sentence. The billet wavered and feels down. How would it be possible? Because the sentence, the first part of the sentence is in the past tense, and according to the sequence of tense, the first part of the sentence, when it became the past tense, the second part automatically should be past tense. That means it should have been fell, not feels. तापरे आम आसवा तार एक्सप्लेनेशन को से मु कही जे सर्गेई तांकर झरका पार्श्व थी कौन घटना घटुची से देखापी चेष्टा करुले देखुले एवं से देखिले से तथाकथित शिक्षक जे कि शिक्षक हिसाब से कहला बेगर से कौन कला ना ही सॉ द स्यूड टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग गोटे काठ गंडी रे जाई करी सेठी प्रथम करी से जे करी थप करी बसी पड़ला एवं से तार दुनिया रे हजिगला कौन कला बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स से ता माने
गालरे हाथ दे मोटा हाथ मुठा करी से बसी पड़ा। आम जाना कथा जे से काम कर किंतु जाइकरी से लत करी बसी पड़ा। द वोमेन हु इज द वोमेन हियर means Olga, the cook. The woman flung down an axe at his feet. से कौन कले माने से बेगर पाकू ता पाद तल को गोटे ता पाकू गोटे काटिबा पई गोटे कुराड़ी ताकू देले एवं से विरक्ति रे ता पाखरे से छेप पकैले थुकी देले। And judging from the expression of her lips began to scold him. कौन ताकू देखी विरक्त लगुला से तापरे ताकू गाली दबा आरंभ कले किए से जो ओल्गा। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with an axe. आमे जानी छो the beggar didn't have any interest to work. तार कौन सी इच्छा नथिला एवं ता शरीर मध्य सपोर्ट कर नथिला सेति पई से तो बाध्य होइतिला। से कौन कला जिते बड़े ताको कुराड़ी दिया गला काटिबा पई से कौन कला अ बिलेट मीन्स अ थिक पीस ऑफ वुड माने गोटे काठगंडी सेठु आनी करी आ ता दुई पाद मझिरे रखी करी आमे जंती काठ काटी थाउ ताकू से एमती चोट मारिला एमती दुर्बल भाव रे ताकू एमती कला हेला कोन द बिलेट्स वेवर्ड एंड फेल डाउन सेठी माने ता साइड रे बाजी करी काठगंडीटा उड़ीगला छिंचड़ी हो पड़ा से पड़गला सेटा। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting his finger. The stick of wood again fell to the ground. तापरे जते बेले काठटी सेठी छिंचाड़ी पड़िला तापरे से कोन कला ताकू पुणी आनिला से बेगर पुणी ताकू आनला पाकू आनला एवं ता ठंडा हाथ रे ब्लो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स ठंडा हाथ फ्रीजिंग हैंड्स माने जानिछु हम रूस गोटे शीत प्रधान देश से अत्यधिक ठंडा ता हाथ थरु थाए एवं सेठी पुणी ताकू टैप कला पुणी ताकू बाड़ेला बहुत कशसली माने एथर से कौन कला जिते बाड़ेला ताकू से बहुत ध्यान दे करी बहुत कशसली केयरफुली ताकू से चोट मारिला कहीं ना तार डर थिला केतेबेले ता ओभरशू जो ओभरशूटा पिंधिला सेठरे बाजिबो ना ता केतेबेले ता आंगुठी ऊपर बाजिबो सेतिपई से बहुत कशसली कला किंतु हेला कोन व्हाट वाज द रिजल्ट द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड हेला कोन सेठी स्टिक ऑफ वुड माने काठगंडीटी सेही तळे पुणी पड़ीगला। सो द होल सीन was being observed by Sergei, who was standing at the side of the window of his dining room. Sergei's anger had vanished and now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. Sergei को लोकटर अवस्था देखकरी Sergei भितर थिबा राग से उभै जाइथिला vanished. तापरे तांको गोटे खराब लगुला कहीं जड़े गोटे एमती जड़े व्यक्ति को जा देहरे शक्ति नाला गोटे मद्यप लोक असुस्थ जना पड़ुछि तांको आनिक गोटे शारीरिक एमती गोटे परिश्रम कराइबाटा एपाई आगुरी जमती सर्गाई को ताकू देखले राग लगुला से ठकुला बोली किंतु एबे तांको भितर गोटे दया आसला से सॉरी फील कले एवं लज्जित फील कले आ तांको एभली एक ठंडा समय आनिकरी खटेइबा एटा तांको ठीक लागुनथला। सो सर्गाई फेल्ट सॉरी दैट ही शुडंट हैव अपॉइंटेड दिस मैन फॉर chopping his wood. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. There is another spelling mistake in your book, CHOPED, that should have been CHOPPED, because it is in the third form of the verb CHOPP, double P. An hour later, Olga came in. गोटे घंटा पर तापरे अलगा आसला एवं घोषणा कला जे सर आज काठ जतकी काटिबा कथा सब हो जाइछि। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month.
वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम गोटे घंटा पर जिते से आसला कहला जे आज हो काठ कटा सरी जाइए सरगाई कहले ठीक ताहले आज ताकू ता पारिश्रमिक हिसाब रे अधा रूबल ताकू दिया जो हाफ ए रूबल इट शुड बी गिवन हाफ ए रूबल फॉर टुडेस वर्क एवं जदि से चाहे इफ यू वांट्स टू कम बैक जदि से आपको चाहे से आसिकरी प्रत्येक मासर प्रथम दिन से आसिकरी अर्थात 1 तारिख आसिकरी से आम पाखु जॉइन करि पारे आमे तापई सब बेले व्यवस्था करबा काम खोजिबा आमे तापई वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम on the first of the month the whip means a homeless person is called a whip एमती भिखारी भलिया लोक आवारा on the first of the month the whip made his appearance again and earned half a ruble although he could barely stand on his legs. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rocks and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers was sent out to him. तापरे परे तार प्रथम सफलता परे after the first success of his work, then he was once again invited to come to Sergei's house on the first of every month. So on the first of every month the whip made his appearance. तापरे से सतकु सत प्रत्येक मासर प्रथम दिन से आसिला एवं जेबे आसिला ताकू सब बेले ताकू दियागला he earned half a ruble ताकू आधा रूबल ताकू दियागला जदिओ से निज गोड़े ठीक से ठिया मध्य होई पार नथिला although he could barely means rarely hardly although he could barely stand on his legs जदिओ से निज गोड़े ठीक से ठिया भी होई पार नथिला एते दुर्बल थिला जी. From that day he often appeared in the yard and every time work was found for him. सही दिन ठू से आगकू सब बेले से आसला एवं सब समय काम जोगाड़ कर दिया गला. Now he would shovel means होचे कौन देख स्नो बा कोदाल टाइप रो गोटे डिवाइस गोटे यंत्र जोटा कि बरफ काढ़ा व्यवहार करा जाए ताकू कहा जाता है shovel. So shovel is used as a verb here माने सही साहाय्य रे बरफ काढ़ा. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rocks and mattresses. तापरे जितेबाला से रेगुलारली आसला से काठ काटिबा व्यतीत तापाई अन्य कामर मध्य जोगाड़ करागला. कौन कौन से व्हाट मोर ही डिड से कौन करगला तापाई से बरफ क्लीन करिबा पाई तापरे काठ गोदाम रे काठ सजाइबा पाई तापरे तांकर जो मसिना हैला मैट्रेसेस हला ए सब गुडा करे लागितवा धूली गुडा झाड़िबा पाई मध्य ताकू ए सब एक्स्ट्रा काम गुडा को दिया गला एवं प्रत्येक थर ताकू 20 to 40 kopecks 20 ରୁ 40 kopecks तांकू पारिश्रमिक हिसाब रे दिया होतला एवं थरे अंततः खुशी करी ताकू गोटे पेयर ट्राउजर्स मध्य ताकू दिया गला. बुझियला. When Sergei moved into another house, he hired him to help him in the packing and hauling of the furniture. This time, the whip was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head, not even making pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. आमे मीनिंग जानिबा जेतेबेले सर्गेई तांकर घर शिफ्ट कले गोटे जगार आ गोटे जगह गले पैकिंग एंड हॉलिंग मीन्स कैरिंग ट्रांसपोर्टिंग द फर्निचर ट्रांसपोर्टिंग गोटे नु आ गोटे जगह नेवा आनिबा करबा से समय तार देखा जाउतला दिस टाइम द विफ मीन्स द बेगर हाउ डिड द बेगर लुक से समय केनते देखा जाउतला सोबर शांत जना पड़ुतला उदास जना पड़ुतला ग्लोमी एवं प्रिटेन्स माने होचे छलना करिवा शिवर माने होचे थरिबा
टैटर्ड माने होचे जानिछ चिराफटा आउ एम्ब्रेस्ड मीन्स होचे टू बिकम शाय एंड अनकंफर्टेबल आम जड़े लज्जित होबाटा एवं अनइजी फील करवाटा से होची एम्ब्रेस्ड आउ गोटे सेठी होचे जे এই সেন্টেন্স রু আমি যেতবেলে নেবা he only shivered in the cold and became embarrassed and he started fancy overcoat after the moving was over. Sergei sent for him. This sentence makes no sense because I don't think this is a grammatically correct sentence. এটা তার ঠিক রহুনি সেন্টেন্সর প্যাଟর্ন ঠিক নাই তেণুকরি ମୋ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଠି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି କହିଦେଉଛି he only shivered in the cold and became embarrassed with his এটা ହେବା କଥା with his tattered fancy overcoat. Thereafter there should have been a full stop. ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସରି full stop. After the moving was over, comma, Sergei sent for him. एमती हवा कथा मुझे कहीदे जहाँ भी हो सर्गेई जितेबाला गोटे जगार आ गोटे जगह तक घर चेंज कले से या डकागला कम करने माने नेबा आनिबा जिनिसपत्र नेबा आनिबारे साहाय्य करने पुणी बेगर को ताकू डकागला ए समय से कला कौन ही हार्डली टच्ड द फर्निचर कौन से फर्निचर से टच भी करनी कौन कला जितेबाला ताकू रास्तार नेउतले सब फर्निचर जिते लोड कर नेउतले वागन वागन माने सहीटा सही जो लोड करा जाई थाए पिले रेलवे वागन जंती थाए ट्रॉली वागन माने गोटे प्रकार ट्रॉली सो से कौन कला से ट्रॉली पछाड़े से वागन पछाड़े से मुंडटा हले 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 से गला नॉट इवन मेकिंग प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी प्रिटेंस माने छलना इवन से छलना मध्य करनथला से किछि काम करूछि बोली आराम से पछाड़े मुंडटा हले 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 से चालूला ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड थंडारे प्रचंड थंडारे से थरुला ही बिकेम एम्ब्रेस्ड एंड हिज विथ हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट एवं ताकू प्रकृति में सही ताकू जी देखुला सेतबेले से लज्जित अनुभव करुला सामना कर पार नथिला एट द एंड ऑफ द हॉलिंग ऑफ द फर्निचर आफ्टर द मूविंग वाज ओवर सर्गेई सेंट फॉर हिम तापरे जतले सरीला काम सर्गेई तापरे डकैली कहिले वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Lushkap. Well, Lushkap, I can now offer you some other cleaner employments. Can you write? I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. जितेबाला काम सरी जाइए से दिन जितेबाला काम सरी जाइए नेबा से जो जिनिस ट्रांसपोर्ट करवा काम सरी जाइए तापरे सर्गेई बेगर को डकई पठिंट डकई सारा पर कौन कहते से खुशी व्यक्त कर वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट किए कहला हु इज द स्पीकर द एडवोकेट सर्गेई इज द स्पीकर Well, I am happy that my words have taken effect. He started handing him a ruble. गोटे रूबल मन रख ताकू हाफ ए रूबल दिया होता है गोटे रूबल ताकू दिया गला गोटे रूबल ताकू बढ़ाई देकरी से कहले मु तो काम रे अत्यंत खुशी अच्छी यही हूँ तोर पारिश्रमिक तू जो कष्ट करिछु तो जंत्रणा जोटा सहीचु हियर्स फॉर योर पेन्स आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क व्हाट इज योर नेम तापर से कहले मु देखुची जे तू हूँ बहुत शांत शांत शिष्ट एवं जहाँ काम देले तू से केतबेले ऑब्जेक्शन करूनु जहाँ काम कले तू ता ग्रहण करुछु बाय द वे व्हाट इज योर नेम तो पचारे ता ना कौन एवं तार उत्तर से कहला ता ना हूँ लुस्कप से कहले वेल लुस्कप आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब कैन यू राइट So tapare कहले because we know Sergei had been satisfied with the work of the beggar
କାମରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁକରି he wanted to give him some cleaner employment instead of this hard work of doing the chopping of wood or transporting things like this. से यही काम अपेक्षा ताको टिके उन्नत काम देवा पई से कहले ताको पचारिले सेतिपई जे तू लेखि जानी चुकी से कहला से जानी छी. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. से कहले गोटे चिट्ठी देले एवं से चिठीटा ताको धरई देले एवं से कहले तू जाई करी मोर जने बंधु अछंती तांको साक्षात कर एवं सेठी तते गोटे लेखा पढ़ा किछि काम दिया जीवो. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. से कहले से एडवाइस देले ताको उपदेश देले ठीक अच्छे भाई परिश्रम कर, तू पिया पी बंद कर, किसी मद तू पीनी एवं मन रख मु तोते जहाँ कही एतिकी कही ताकू से गुड बाय कले. So pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Luskov took the letter and from that day from forth came no more to the yard for work. तापरे अत्यधिक खुशी हुई सर्गाई कौन कले बेकारी सहित बेगर सहित बा ये आम जाना से हूँ लुस्कप सहित हैंडसेक कले ता पिठी थापड़े खुशी रे ताको चिठी दे ता सहित हैंडसेक कले. से चिठीटा से धरला आ लुस्कप सेठू विदाय नेला एवं ता परवर्ती समय आउ सी एडवोकेट घर को केवे फेरिला नहीं. So that's the end of the part 1 and 2 of the story The Beggar by Anton Chekhov. So we'll go and discuss the rest part of the story, that is part 3, in my next video. Until then, bye.